Hello, everybody. This is Mr. Sajid Hussain. Let's begin with the word tense. Tense. What is tense? The word tense has been derived from a Latin word tempus, which means time. It is defined as the word form that shows the time of an action or state is called tense. Dear viewers, टेंस का जो लफ्ज़ है ये लतीनी ज़बान के लफ्ज़ टेम्पस से अहज़ किया गया है जिसका मतलब है टाइम यानी वक्त। और इसकी डेफिनेशन हम यूं कर सकते हैं कि वर्ब की फॉर्म, वर्ब की हालत जो किसी एक्शन या स्टेट का हमें टाइम बताता है इसको टेंस कहा जाता है। Dear viewers, basically there are three tenses. The present tense, it shows the present situation. Dear viewers, dear students, बुनियादी तौर पर हमारे पास तीन टेंसेस हैं। द प्रेजेंट टेंस यानी फिलहाल, ये हाल के सिचुएशन को, हालात को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। प्रेजेंट स्टेट, मैं एक उस्ताद हूँ। सिमिलरली, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन। सेकेंड, द सिंपल पास्ट, फिल माजी, it shows the past situation. For example, he went to Peshawar yesterday. वो कल पेशावर गया। वो कल पेशावर गया पास्ट सिचुएशन को जाहिर करता है। एंड द थर्ड टेंस इज द फ्यूचर टेंस। इट शोज द कमिंग टाइम इमेजिनरी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू द पार्क टुमारो। मैं कल पार्क जाऊंगा। द फ्यूचर टेंस मीन्स फिल मुस्तकबिल, ये आने वाले फर्जी ख्याली हालात को, सिचुएशन को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू द पार्क टुमारो, मैं कल पार्क जाऊंगा। सो डियर व्यूअर्स, बेसिकली वी आर हैविंग three tenses. If God wills, all 12 tenses I will explain one by one in an easy way. And I will teach you through simple tricks how to learn the tenses very soon and very well. And I will try my best to teach you with the margin formulas how to learn tenses through margin formulas. Wish you all the best. Happy studies.